Good morning, class. It's our second lecture. So in our last lecture, I told you about the distance and displacement. Now we will study about the difference between distance and displacement. Okay. So just look here. Difference between distance and displacement. I told you about these two quantities, that distance is the total length of the path traveled. Okay. And the displacement is the shortest path possible. As I told you in my last video that the length of the path which you cover, okay, like you started from your home, you went to your school, then you come back to your home, your school is 2 kilometers away from your home. So you traveled 4 kilometer distance. The total path which you traveled, the total length of the path which you traveled is 4 kilometer. As you have gone 2 kilometers to your school, then you come back again that 2 kilometer and you travel 4 kilometer distance. But if we talk about the displacement, so your displacement is 0 in this case, okay, because you come back on the same point from where you started. Okay, so as I told you in my last lecture that displacement is the shortest distance between initial and final position. So when you come back your home, your initial and final position is same. Okay, means you are on the same place. So the distance between initial point and final position is same. Okay, means it is 0. Okay, so now we will discuss about the distance. Okay, so as I told you, it's a scalar quantity and this displacement is a vector quantity. Okay, distance it cannot be 0. Why? अगर आप अपने घर से चले हैं तो आप कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, कुछ ना कुछ पाथ को कवर करेंगे. So it cannot be 0. Okay, if you are on the same place, means you are not traveling, you are not moving, means you are not covering any distance, you are not covering any path. Okay, in this case distance traveled is 0. Okay, but displacement could be 0. It can be 0. How? As I told you just now that when you started from your home, you went to your school, you come back again. So your starting point and your finishing point is same, so that your displacement is 0 in this case. One more example I will give you. Like suppose you have a stone and you throw that stone in the upward direction and it traveled 10 meter distance. Okay, and it again come back in your hand. So what is the distance that stone traveled? 10 meter when it's going up, okay, and 10 meter when it's coming again back to your hand. So the total distance is 20 meter. But if you talk about the displacement, so your displacement of that stone is 0 because it again reaches to your hand. Its displacement is 0. Okay, so displacement could be 0 but distance cannot. Okay, second thing, distance it is always positive. Okay, जब भी आप कहीं से मूव कर रहे हैं, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली जो भी डिस्टेंस वो कवर करेगा वो पॉजिटिव ही होगी, चाहे वो 10 मीटर हो, चाहे 10 किलोमीटर हो, चाहे 10,000 किलोमीटर हो, वो सारी डिस्टेंसेस क्या होंगी? पॉजिटिव. ओके, बट व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट? इट कुड बी नेगेटिव, 0 एज वेल एज पॉजिटिव. ओके, 0 का मैंने आपको बता दिया है. हाउ इट कुड बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव? लाइक सपोज योर फ्रेंड, you are Changu. There are two friends. One is Changu and one is Mangu. Okay, Changu को मंगू से मिलने उसके घर जाना है. Okay, but Changu को उसके घर का रास्ता पता नहीं है. Okay, so suppose Changu घूमते घामते मंगू के घर पहुंच गए finally. Okay, so in this case the distance between initial and final position is positive because जब चंगू अपने घर से चले
तो वो थोड़ा बहुत भटके और फिर फाइनली वो मंगू के घर पहुंच गए जो उनका टारगेट था, राइट। सो इन दिस केस उनका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हुआ, पॉजिटिव डायरेक्शन में वो मूव करे। मींस हमने जो मंगू के घर है इस घर को हमने ओरिजिन पॉइंट से पॉजिटिव डायरेक्शन में लिया है, राइट। समझ आ गया। दूसरा केस हम देखते हैं कि एज आई टोल्ड यू कि चंगू को मंगू के घर का रास्ता नहीं पता है, ओके। सो चंगू घूमते घामते एक ऐसी जगह पहुंच गए जो मंगू के घर से थोड़ी और दूर उन्हें ले गई, राइट। वो थोड़ा सा और दूर चले गए। इट मींस यहां पर जो मंगू खड़े हुए हैं, ये मंगू क्या ये जो चंगू खड़े हुए हैं, ये चंगू जो है क्या ये मंगू के घर की तरफ को गए हैं या उनसे दूर चले गए हैं। सो ऑब्वियसली द डिस्प्लेसमेंट ऑफ चंगू इज इन नेगेटिव डायरेक्शन एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन, ओके। सो वो मंगू के अपने टारगेट की तरफ ना जाके टारगेट से दूर चले गए हैं। इट मींस वो उस अपोजिट डायरेक्शन में चले गए हैं अपने टारगेट की। So his displacement is negative in this case. Is it clear to you? Is it clear? So the next thing I will tell you about the speed and the velocity. Speed and the velocity. Next point is speed and velocity. So first thing that I will tell you that total distance traveled in unit time. Speed is total distance traveled in unit time. The formula of speed is equal to distance upon time. अगर आपने टाइम को यूनिट मान लिया, 1 मान लिया, यूनिट मीन्स 1, ओके। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। सो इसी से मैंने इसकी डेफिनेशन को बनाया that total distance traveled in unit time is called speed, okay. What about the velocity? Velocity is equal to displacement in unit time. Time को हम यहां पे 1 मान लेंगे, so velocity will be equal to displacement in this case. So velocity is equal to total distance in unit time in a given direction. As I told you that displacement is a vector quantity, so that's why velocity, when we take velocity, तो velocity must be taken in a given direction, okay? समझ आ गया? So इससे हमें एक बहुत सिंपल सी चीज पता चलती है कि velocity भी जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगी, राइट। स्पीड इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि यहां पे सिर्फ हम मैग्नीट्यूड को ये सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, इट डजंट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन। एज डिस्टेंस is not a vector quantity, it's a scalar quantity, so that speed is also a scalar quantity. Is it clear to you? Now the third point, it could not be zero. As I told you, distance cannot be zero, so the speed is equal to distance upon time. That's why speed also cannot be zero, okay. Next thing is velocity. Third point of velocity, that it could be zero, positive or negative. As I told you, velocity depends on displacement, okay, and the displacement could be positive, negative or zero. That's why velocity is also can be zero, positive and negative. When the object is coming back on its initial position, okay, its velocity is zero, okay, right? Is it clear? And positive if it is in if it is in a positive direction, okay, if it is the motion of the object is in direction of the target, okay, then it is positive. If it is opposite to the direction of target, okay, then it will be taken as negative, okay. What about the unit now? Okay, unit of speed is distance upon time से हम इसकी यूनिट निकाल सकते हैं। डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, SI यूनिट इज मीटर, एंड द टाइम की यूनिट जो है SI यूनिट वो है सेकेंड। सो द यूनिट ऑफ दिस स्पीड इज मीटर पर सेकेंड,
Okay, it could be written as meter per second or you can write it as मीटर सेकंड इनवर्स. ये जो सेकंड की पावर है ये यहां पर है 1 और इस 1 पावर को जब आप ऊपर न्यूमरेटर में ले जाओगे तो ये नेगेटिव की हो गई है. सो वी कैन राइट इट एज मीटर सेकंड इनवर्स. इनवर्स का मतलब यहां पे -1 को हम बोल रहे हैं इनवर्स. ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द वेलोसिटी. वेलोसिटी की यूनिट भी वही होगी जो कि स्पीड की है, बिकॉज द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर, यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड. So it could be written as meter per second or meter second inverse. Okay, is it clear to you? So this is all about speed and velocity. Now the third topic is average speed and average velocity. Why we taken as average? Why we are taking this term average? Okay, just we can take one example. लाइक हम यहां से स्टार्ट करते हैं पीलीभीत से और बरेली तक जाते हैं, और पीलीभीत से बरेली तक जाने में हमारी जो स्पीड रही वो कांस्टेंट रही. लाइक 50 किलोमीटर पर आवर से हम कंटिन्यूअसली ट्रेवल कर रहे हैं. सो उस केस में हमें पता है कि हम पीलीभीत से बरेली तक 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करेंगे, राइट? बट क्या एक्चुअल में ऐसा होता है? नो. आंसर इज नो. व्हाई? बिकॉज जब आप पीलीभीत से बरेली जाएंगे तो बीच में रोड भी खराब आएगी. यू मस्ट यूज योर ब्रेक. यू मस्ट समटाइम इफ रोड इज फ्री यू विल इंक्रीज द वेलोसिटी, यू विल इंक्रीज दैट स्पीड. ओके, सो दैट स्पीड इज नॉट कांस्टेंट थ्रू आउट द पाथ. ओके, स्पीड इज नॉट कांस्टेंट थ्रू आउट द पाथ. So how can we calculate the average speed in that case? Okay, so the average speed is now when object is in non-uniform motion. Non-uniform means उसकी speed जो है वो continuously change हो रही है. In that case, then its speed could be calculated by total distance traveled. यहां से total distance travel, like यहां से आपकी जो distance है बरेली की वो है 50 किलोमीटर फॉर एग्जाम्पल. ओके, एंड द टोटल टाइम टेकन. सपोज यहां से आपको बरेली तक पहुंचने में 1 आवर लगा, राइट? 1 आवर आपने लिया. सो द एवरेज स्पीड वुड बी 50 किलोमीटर अपॉन 1 आवर. ओके, सो इट विल बी 50 किलोमीटर पर आवर. बट बीच में कभी आपकी स्पीड 30 भी हुई होगी, कभी आपकी स्पीड 60 भी, 80 भी, 90 भी. ओके, सो this is all about average speed. Average term comes when the speed is continuously changing. It is not uniform in that case. Okay, now we will talk about average velocity. Average velocity is also as similar as average speed, but it is in a particular direction. But when we talk about velocity, the velocity is speed in a particular direction. Okay, because it's a vector quantity. Is it clear now? So if velocity changing at non-uniform rate, जैसे अभी मैंने बताया कि यहां पे velocity जो है वो कभी 10 है, कभी 50 हो रही है, कभी 20 हो रही है, कभी 60 हो रही है. सो उसमें कोई एक रेट जो है वो कांस्टेंट नहीं है. उस केस में हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. ओके, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. ओके, व्हेन दैट वेलोसिटी इज नॉट इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट. पहले 10 थी, फिर 30 हुई, फिर 50 हुई, फिर 60 हुई, फिर 80 हुई. सो मींस इट्स नॉट इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट. ओके, इन दैट केस वी विल यूज दिस फॉर्मूला. But when it is increasing, suppose it is increasing, suppose its velocity is changing at a uniform rate, like 10 थी, 10 से 20 हुई, 20 से 30 हुई, 30 से 40 हुई, 40 से 50 हुई, 50 से 60 हुई. मींस जो velocity increase कर रही है वो एक constant rate से कर रही है. In that case, we will use that formula u plus v by 2. What is u here? U is actually initial velocity. Initial velocity, and V is final velocity.
Is it clear to you? So u is denoted for initial velocity and v is denoting final velocity. Okay, like a body started with 10 km per hour and when it reaches at its final point, its velocity is 80 km per hour. So in that case, u is 10 and v is 80. Is it clear to you? Now we will talk about these distance time graph. Some graphs you can see here, 4 graphs. So these graphs are actually distance time graph. Okay, on the y-axis I have taken distance, on x-axis I have taken time. Okay, so let's discuss about these 4 graphs. So first graph में हमें क्या दिखाई दे रहा है? फर्स्ट ग्राफ में हम देख रहे हैं कि टाइम आगे बढ़ रहा है. टाइम था यहाँ पे 5 सेकेंड, फिर 10 सेकेंड, फिर 15 सेकेंड, फिर 20 सेकेंड. सो इस तरीके से टाइम इज इंक्रीजिंग. बट व्हाट अबाउट डिस्टेंस? डिस्टेंस यहाँ पे सपोज यहाँ पे 10 मीटर डिस्टेंस है. 10 मीटर पे हमने देखा, जब इनिशियली हमने देखा इट वाज एट 10 मीटर. 5 सेकेंड के बाद देखा इट इज स्टिल एट 10 मीटर. 10 सेकेंड के बाद देखा स्टिल एट 10 मीटर. 15 सेकेंड के बाद देखा स्टिल एट 10 मीटर. मींस that object is in rest. Is it clear to you? That object is in rest. So you will write it here. Object is in rest. Okay. Second graph. Second graph में हम देखते हैं. Let's draw some values. 5 second, 10 second, 15 second, 20 second, 25 second. 5 meter, 10 meter, 15 meter, 20 meter. So you can see here, initially the object is at rest. 0 second पे 0 meter पे वो है, origin point पे है. 5 second के बाद उसने 5 meter की distance travel कर ली है, right? After 10 second it has covered 10 meter distance. Okay. After 15 seconds, it has traveled 15 meter distance. After 20 seconds, it has traveled 20 meter distance. Means the speed of the object is constant. हर 5 सेकंड में वो 5 मीटर कवर कर रहा है, right? हर 5 सेकंड में 5 मीटर ट्रैवल कर रहा है. It means its speed is distance upon time 5 meter upon 5 seconds. So it will be 1 meter per second continuously. So this is an example of, this is the graph of uniform motion. Uniform motion. Okay. Let's take third graph. Distance और time का यहाँ पे एक ग्राफ दे रखा है. इसमें जो distance है वो continuously बढ़ रही है. Distance, time कम बढ़ रहा है but distance continuously बढ़ रही है. Okay, this is an example of non-uniform motion. Sorry, it is an example of non-uniform motion because the graph is not linear. This was a linear graph. Linear means a straight line, but this graph is a curve. This graph is curved. So because it is curved, so it is non-uniform motion. Okay, non-uniform motion. But with increasing speed. Now the fourth graph. This graph is denoting, again, it is a curved line. So this is also denoting non-uniform motion. But in this case, the speed is decreasing. Okay? Is it clear? So the 4 distance time graph are given below. These graphs are very important for the further studies. Okay, so this is all about in our second lecture. So thank you class, we'll meet in third lecture again.